This part of the bulletin is brought to you by Gautam Bali Makeup Studio and Academy, Sector 1, Chanihima, Jammu. Good evening all, you're watching the news now and I am Bindya with the news at 5. Let's have a look at the headlines first. Indore crowned Swachhata Ka Taj becomes the cleanest city for the 5th consecutive year. Finance Minister to visit J&K will review economic development in the Union Territory. Encounter erupts in Ashmuji, Kulgam, TRF commander killed. And US Defense Minister's big statement, America will stop Iran from acquiring nuclear weapons. And now the news in detail. 3 children and an elderly woman died in Kadiri town of Anantapura district when a 3-storied building collapsed due to heavy rains late at night. The building was an old construction and could not resist the rains. The circle inspector reported that over 4 people are still trapped inside the building rubble, for which the rescue operation is underway. Indore in Madhya Pradesh was crowned with the Swachhata Ka Taj by President Ramnath Kovind at the Swachhata Amrit Mahotsav function organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs at Vigyan Bhavan in Delhi. The city has clinched India's cleanest city title for the 5th time in a row. Gujarat's Surat and Andhra Pradesh's Vijayawada grabbed the 2nd and 3rd position respectively. Varanasi received the 1st position in cleanest Ganga town category and a total of 4,320 cities were covered in Swachhata Sarvekshan 2021, the 6th edition of the survey, making it the world's largest urban cleanliness survey. In the latest edition, Chhattisgarh has been ranked the cleanest state in the country. The Finance Minister Nirmala Sitharaman likely to be on 2-day visit to J&K from November 23rd, and Minister will be here to review the status of economic developments in the Union Territory. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to be on 2 days visit to Jammu and Kashmir starting from November 23 from Jammu. This will be the first visit of Finance Minister after the revocation of Article 370 in J&K. She will be holding deliberations with the stakeholders from the business, trade and industry delegations at Jammu Hat on the first day. Earlier, the Union Finance Minister had interactions with the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha last week, along with Chief Ministers and Finance Ministers of all states via virtual conference, with a view to enhance the investment climate in the country and to step up investment, infrastructure and growth through a consultative process in the post-pandemic world. The issues highlighted by the Lieutenant Governor will be the areas of focus during the review meetings between the Finance Minister and the various stakeholders on November 23rd and 24th at Jammu and Srinagar. Security forces gunned down one TRF commander in an encounter in Mahagund area of Ashmuji, Kulgam. The security forces had launched a search operation in the area where 2 militants were believed to be trapped. Security forces retaliated to the firing that started from the other end, erupting into an encounter. The Jammu and Kashmir Eligible Engineer Graduates Association today thanked the Lieutenant Governor-led administration for addressing the issue of regularization of engineers that had been pending since 20 years. The association also lauded the efforts of role played by the Principal Secretary PDD Rohit Kansal for a quick action. एम्प्लॉइज के वेलफेयर के भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में आपको याद होगा डेली वेजर्स के लिए 24 लाख रुपए का एक्सक्रीशिया रिलीफ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने रिलीज करवाया है, उसको सैंक्शन करवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये एक लैंडमार्क स्टेप्स होते हैं जो कि सदियों में जो है डेकेड्स टुगेदर के बाद जो है ऐसा देखने को मिलता है। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि इनके आने की वजह से जो हमारे रिटायर लोगों थे, जो 20-20 साल से रिटायर होके अभी भी सेक्रेटरीट के दरवाजों पे अपने चक्कर लगाते रहते थे, उनके मसले जो है हल किए हैं, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारी पूरी टीम, हमारे पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स जो है उनकी तरफ से मैं उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं। J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं और आगे भी उनसे दरख्वास्त करता हूं। The BJP leaders held a press conference to condemn the accusation by Congress leader Dr. Manohar Lal in a rally held at Dayala Chowk in Kathua, naming PMO Dr. Jitendra Singh in collusion with the toll plaza and mining mafia. The conference, led under the chairmanship of Premnath Dogra, demanded the Congress leader's apology over the remarks or face a defamation case against him. वो एग्जीक्यूट किया
तो मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसे लोगों की कि जो देश को आगे ले जा रही है। ऐसी पार्टी, ऐसे कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे ऑनरेबल डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह जी बबलू जी ने बड़ा अच्छा आपको बताया इस विषय में। हमारे सीनियर नेता अपने प्रेम डोगरा जी है मेरे साथ, एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काकाराम अंकल जी, मेरे मंडल प्रधान जी रजेश जी और पूरे सीनियर कार्यकर्ता जितने भाजपा के हैं, ये दिन रात अपनी देश की सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे हार्ड वर्क और ऐसे सेवादार मैंने नहीं देखे अपने जीवन में। मुझे भी मौका मिला इस पार्टी में काम करने का, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी अजीब से कि इन्होंने जो इन्होंने दयालचक में किया है प्रोग्राम अच्छा नहीं किया और ऐसे आरोप लगाना निंदनीय है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The JK Zamindara Forum President Hamid Malik has welcomed the decision of repealing farm laws by central government. He said that from day one farmers were against these laws and it took a present dispensation at centre almost a year to repeal them back. He said that unless these laws were not repealed by passing a bill in the both upper and lower houses of parliament, farmers were not lifting their protest. He said that although this is a welcome step, but government should ensure implementation of minimum support price of all crops, including apple, so that the farmers could feel a sigh of relief. डिसाइड होगा कि इसको किस अंदाज से एमएसपी के लिए और बाकी मुद्दों के लिए कैसे लड़ा जाए। देखिए, पहले खुशी की बात है कि आज 1 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 लाख वापस लिए थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो संसद में पहले एक कानून निकाले। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो इसके लिए एक लॉ जो 3 लॉ है एमएसपी पे वो एक बिल बनाए, फिर वो कानून वापस ले। बहुत खुशी की बात है 1 साल के बाद मान लिया ना इस चीज़ से हम। तो आप कोई पता चला कि जो उसने 1 साल पहले जो कानून बनाया था वो गलत था। आज 1 साल के बाद उसको पता चला कि यूनिटी में जो इस वक्त किसानों ने दिखा दी कि यूनिटी में कुछ दम है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है कि उसने जो कानून वापस लिया था। आप बाकी जो कह रहे थे इलेक्शन से क्या है, लेकिन नहीं, वो खुशी की बात है कि उसने कानून वापस लिया। A day after the administration handed over 2 bodies of slain of Hyderpura encounter to their families, the district chairperson Ramban, Dr. Shamshad Shan, today appealed the administration to return the dead body of the third slain Aamir Ahmed Magre, who died the same day in the same encounter. Appreciating the step taken by the administration exhuming bodies and handing over them to the families, she demanded that the rationalist family of this third slain in Ramban is still waiting for the body of their son, and the administration should immediately take an action in the same regard, or else the family would not be left with no other option than to stand against in protest. शाम तक इंशाल्लाह कोई ना कोई डिसीजन जो है एलजी साहब लेंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई डिसीजन नहीं आता है तो उस सूरत में हम जो है जरूर हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। इसका सवाल है स्टेटहुड का, उसके साथ साथ 370 का। आपने शायद कल ही देखा होगा कि जैसे ही फार्म्स लॉज को वापस लिया गया उसमें चेंजिंग लाई गई, तो वैसे ही हमारे जो एमपी हैं हसनैन मसूदी साहब, उन्होंने जो है गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट किया है कि आप उसी तरीके से जो आपने 2019 में जो ऑर्डर्स लिए थे, जो खत्म किए थे ऑर्डर्स, उनको दोबारा से आप जो है कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। और उसी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा स्टैंड रहा है और कल ही उन्होंने जो है उस पे जो है बात की है और आपके सामने आज पेपर्स में आया हुआ है। स्टैंड रहा है स्टेटहुड तो वापस चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ 370 का भी वापस लाना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम स्टैंड है। Thanking the Lieutenant Governor administration for amending the regulations for the SI, the advocate Abhinav Sharma, state spokesperson JNK DGP, today appealed the Lieutenant Governor administration for providing relaxation in the upper age limit to 33 years for SI aspirants, as they have been waiting for the post for 5 years now. Recruitment process within a year complete होना चाहिए ताकि हर साल बच्चे को जब तक वो ओवर एज नहीं होता उसको हर साल एक कम्पीट करने का राइट मिले। जैसे एमबीबीएस में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होता है, जेएंडके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस में होता है। हर एक एग्ज़ाम में एक बच्चे को 4-4, 5-5 राइट्स मिलते हैं कम्पीट करने के। और कंपटीशन का मतलब होता है कि बेस्ट मेरिटोरियस बच्चे सेलेक्ट हों। और अगर आप 30 साल की जगह 33 साल कर दें तो जितनी वैकेंसीज हैं 1200, उसमें हो सकता है 50,000 बंदे
बच्चे अप्लाई करें जिनकी The residential house of Abdul Majid was gutted into a massive fire incident at Shahi Hamdan Colony, Qadim Eidgah, Baramulla. Locals alleged that the firefighters reached the spot at least an hour late, because of which the blaze went out of the control and damaged the house completely. Highlighting the issue of families waiting for the bodies of those killed in Haidapura in a recent encounter and increasing terror activities in the valley, the former Minister and General Secretary of PDP, Dr. Mehboob Beg, appealed to the Prime Minister to visit Kashmir once and ponder on the situation on humanitarian grounds. देश की सोसाइटी से, अपने देश के लिबरल से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इसको टच मी नॉट नहीं समझिए, हम भी इंसान हैं। अगर पूरी दुनिया में इस वक्त एक नारा है, आप क्रिकेट मैच देखिए, क्रिकेट मैच से बाहर देखिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर, क्या कश्मीरी लाइव्स डोंट मैटर एट ऑल? प्लीज़ फॉर हेवन्स सेक, as you do for black Americans, do for Kashmiris as well. We are suffering, we have pain, we are pained to see things everywhere, right, left and the center. From across the world of entertainment, Aamir Khan Productions, which has given Indian audience Lagan, Tare Zameen Par, Dangal and many other cinematic gems over the years, has made its next release on Baisakhi, April 14th, 2022 for Viacom 18 Studios. Presentation Lal Singh Chadda. Date has been announced and Atul Kulkarni has done the Indian adaptation of 6-time Academy Award winning film Forrest Gump, which was written by Eric Roth. Lal Singh Chadda will star Aamir Khan and Kareena Kapoor Khan and is directed by Adwait Chandan with music by Preetham and lyrics by Amitabh Bhattacharya. The film is presented by Viacom 18 Studios. And from across the world, US Defense Secretary Lloyd Austin today said that he would tackle Iran's acquisition of nuclear weapons and its dangerous use of suicide drones in the Middle East. He said that this is in the midst of stalling of talks with world powers regarding Iran's hanging nuclear deal. These words of the defense minister in the annual Manama dialogue are believed to be related to the purpose of reassuring America's Arab allies in the Gulf. And that's all in this news bulletin. For latest update and more news, stay tuned with the News Now web and keep reading the News Now daily and e-print papers. Jai Hind.